We had started. हम डेजर्ट पे थे, इन द सिनाई डेजर्ट. वी सॉ ऑल द मिरेकल्स गॉड डिड. हम देखे सब चमत्कार वो भगवान ने किया उनको. वो पैर का जूता भी लंबा हुआ ये 40 साल के लिए. So here in Psalms 106:19 it says, and they made a calf in Horeb and worshipped a molten image. Thus they changed the glory into the similitude of an ox that eateth grass. सुनो, ये अभी होरेब और सीना is the same place. It's the same desert. Okay. Now he is saying, just see what he did. सुनो, उन्होंने होरेब में एक बछड़ा गड़ा और धातु की मूर्ति को दंडवत किया. उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले महिमा क्या, वापस पढ़ो. उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली. तो इन्होंने क्या किया, जो ईश्वर का महिमा थे वो गाय के इसमें डाला, एक्सचेंज किया. द ग्लोरी ऑफ गॉड दे मेड इट इनटू अ काव, गाय के इसमें. कोई आवाज कोंकणी पळय. एरेबाशी ताणे एक हरकुलो घडयल्या भांगराचे मूर्तीची ती पूजा करूंक लागली. आपल्या महिमेवन देवाक सोडून आपल्या महिमेवन देवाक सोडून तण खाल्ल्या बैलाची ताणे मूर्ती धरली. मागीर तेणे सोडले ते महिमा देवाची आणि एक गायाची मूर्ती केले. ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम स्टोरी. नाउ विल सी अबाउट कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स. In Deuteronomy 7:16. See, everywhere in Old Testament, God is killing people. He's going into a country, telling them take that land, killing those people. Anybody knows why? Anybody can tell me? We see in the Old Testament, God is into all killing business, slaughtering business. And in the New Testament, He's saying, love, love, love. What is the difference? Why is doing that? Anybody can? कोणे सांगू जाता हें कित्याक ओल्ड टेस्टमेंट पोन्ने करना देव तांकां मारतालो, काबार करतालो. कितें पातक केलो जाल्यार काबार करतालो. आतां नोय करून तो मोग 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 करता. कित्याक डिफरन्स कितें तेजे? दिस इज द मेन. सो आई विल कम टू दैट क्रूज पर. ना जाल्यार आतां तुम लोग जो मूर्ति पूजा करता है ना, अगर आप वो भगवान को मानते थे तो आज अब सबको काट के उड़ाता था, जल के उड़ाता था. भगवान अब जिंदा है बिकॉज नाउ वी आर इन द न्यू टेस्टमेंट. अभी देखते हैं ये लोग whenever they went and attacked any country, any place, God told them slaughter everybody and don't take any of their त्यांचे सामान घे नाका, don't take their valuables. Why? Because in their valuables are their gods. In the valuable कुछ भी मूर्ति है उनका कुछ भी मत ले बोल. परमेश्वर पिता बोलते थे उनको. जब उनको मारते थे उनको कुछ भी मत ले उनका सामान. अभी यहाँ देखते हैं एक जगह में ये लोग सामान लेते. So we'll see slowly going down. So in Deuteronomy 7:16 it says, and thou shalt consume all the people which the Lord thy God shall deliver thee. Thine eye shall have no pity upon them, neither shall thou serve their gods, for that will be a snare unto thee. Snare is trap. Okay, what it says, I'll repeat again. And thou shalt consume
all the people which the Lord thy God shall deliver thee. What is saying? Thou shalt consume. Consume is burn up, devour, destroy all the people which the Lord thy God shall deliver thee. Thine eye shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their gods, for that will be a snare unto thee. Snare is trap. If you serve other gods, he is saying, when you go and destroy them, don't keep them, finish them, don't have pity on them, and don't serve their gods. Otherwise, it will be a trap unto you. तुम उन सब जातियों का विनाश करोगे जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे हाथ सौंप देगा। तुम न उन पर दया करोगे और न उनको देवताओं की पूजा करोगे, नहीं तो वे तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगे। दिवसभर तुमच्या हातात स्वतःच्या सर्व सर्व देश प्रजांचं भस्म करतात आणि कसलीच वाहतूक त्यांचा दाखवू नका, त्यांच्या जेव्हा भोगू नका, ना तर तुमचे अदृष्ट येतले. So it will be a snare, it will be a trap. He's saying it will be a trap. So now we'll see Deuteronomy, same chapter 7:23. But the Lord thy God shall deliver them unto thee, and shall destroy them with a mighty destruction until they are destroyed. And 24 says, and he shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their name from under heaven, and shall no man be able to stand before thee until thou have destroyed them. Okay, and then it says, you've seen anywhere here, ये जब war पे जाता है, whenever these people were going for war, it is not by their might that they were strong, that they destroyed. It is God said, I will give them in your hand. God is saying, I will give them. Beforehand, He is saying, I will give them in your hand. You just have to go. So this war is not in the Israel's army, mighty army. It is in God's hand. Then we'll see in 25 what He says. The graven images of their gods shall ye burn with fire. Thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein, for it is an abomination to the Lord thy God. Now see, I am reading it slowly. The graven image here is the in Hebrew, Pisil, which means idol. The graven image of their God thou shall ye burn with fire. Thou shalt not desire silver or gold that is on them. Why? Yeah, what he's saying, see, very important. Thou shalt not desire silver or gold that is on them. म्हणजे ते कितें मूर्ती घालतात तें, you all don't desire that. Lest thou be snared therein. What will happen to you all? You all will be trapped therein. For this is abomination unto the Lord. This is something disgusting unto the Lord. किंतु प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे हाथ दे देगा, और जब तक उनका कौन देगा? प्रभु ईश्वर आपको क्या देगा? तुम्हारे हाथ दे देगा। हाँ। और जब तक उनका सर्वनाश नहीं हो जाएगा, उन्हें भयभीत करता रहेगा। वह उनके राजाओं को भी तुम्हारे हवाले कर देगा, जिसे तुम पृथ्वी पर से उनका नाम तक मिटा दोगे। जब तक तुम उनका विनाश न कर चुकोगे, तब तक तुम्हारे सामने कोई भी नहीं ठीक सकेगा। तुम उनकी देव मूर्तियों में आग में जला दोगे। हाँ, ये मूर्तियों है, ये उनका मूर्ति आइडल्स है, आग में जलाओगे।
उन पर जो सोना चांदी मड़ी है उनका लालच मत करो और उसे अपने लिए मत रखो, नहीं तो वह तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? लालच मत करो, उनके पास मत रखो। वो उन लोगों को जो सोना चांदी डाल रहे हैं, वो मत ले उनके तरफ से। वो जब गांव में आप मारने जाएगा तो उनका वो सोना मत ले बोल रहे। क्योंकि वह तुम्हारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। हाँ, प्रभु यीशु के दृष्टी में घृणित। घृणित। पण सर्वेश्वरात तुमच्या दुश्मनात तुमच्या हातात कोण दिता हातान? सर्वेस्पर दिता तुझ्या दुश्मनाक हातान। ते इस्रायली आमीक लागून न्हू, ते जितोंक ना। सर्वेस्परान तेंका दिला हातीन। एवरीथिंग हियर ऑल वी कम टू नो व्हाट एवरीथिंग हॅपन्स इन द स्पिरिच्युअल रेल्म फर्स्ट. इट डजंट हॅपन फिजिकल. हे दुश्मन बी तुमचे फिजिकल हा, दॅट इज फर्स्ट टॅकल्ड इन द spiritual realm. Nothing comes here first. First happens in the spiritual realm. God is saying what? I will give the army. It's already done in the spiritual realm. That is why you are winning here in the physical realm. This I will come when you are doing altars and all. We will talk about it little. The black magic श्राप घालतात पळय ते इथून in the spiritual realm जाता. हिंगा न्हू. तुका तिंगा बांदपासान घातला, तू हिंगा बांदपासानूच उरतलो. So we'll talk about that. This is what I am trying to show you here. In the spiritual realm, God has already spoken. Because it has happened in the spiritual, Israel is winning now in the physical. He's saying, I am giving you this army. You are not doing it by your might. I am giving you the victory. पण सर्वेश्वर तुमच्या दुश्मनात तुमच्या हातात सोडतलो आणि ताच्या काळजात भिरांत जगयतलो आणि इल्ल्यो त्यो नपयत जातले. त्यांच्या पक्षान तुमच्या हातान सोडतलो. तुम्ही त्यांना मारतल्या आणि त्याच्यात विसर पडटली. कोणाच्यान तुमका आडोवंक जावचे ना. सगळ्यांच्यो कोणाने तुमका आडवंक जावचे ना. सगळ्यांच्यो तुम्ही भस्म करतल्या. त्यांच्यो मूर्त्यो उलपावन त्यांचे रुपे भांगर आसा ते असे आसेव नाका आणि तुमका व्हरू नाका. तसे केल्यार तुमचे अदृश्ट येतले. कित्याक सर्वेश्वर मूर्ती पुजेक विकता. 25 पोतून वच. त्यांच्यो मूर्त्यो उलपाव त्यांचे रुपे भांगर आसा ते आसेव नाका हा, आशा नाका आणि तुमका व्हरू नाका. तसे केल्यार तुमचे अदृश्ट येतले. कित्याक सर्वेश्वर मूर्ती पुजेक विकता. So in 26 what he says? Neither shalt thou bring an abomination into thine house. Abomination into thine house. What is abomination? Abomination is like something disgusting, unpleasant, some abhorrence, feeling of strong hatred. Don't bring these hated things in thine house. Lest thou be a cursed thing like it, but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it, for it is a cursed thing. What is detest it? Thou shalt pollute it. Thou shalt make it impure, thou shalt pollute it. What is saying? I'll just read again. Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it, but thou shalt utterly detest it. Detest is thou shalt pollute it, thou shalt loathe it. Loathe is dislike it, and thou shalt utterly abhor it. Abhor is what? Abhor also is you hate it. For it is a cursed thing. What it is? God is saying, it is a cursed thing. या मूर्ती बा हाडटा त्यांचे इट इज अ कर्स थिंग. गॉड इज सेइंग इट इज अ कर्स थिंग. ऐसी घृणित वस्तुएं अपने घर में नहीं रखोगे ऐसे वस्तु, नहीं तो तुम भी उनकी तरह नष्ट हो जाओगे. तुम उनसे घोर घृणा करोगे क्योंकि उनका सर्वनाश
निश्चित है। जो मूर्ती तुमच्या घरात आणू नका की त्या कोणाचे ते मूर्त्यो ते दुश्मनाचे ते मारून गेल्ले त्यांचे काय आतलाय नाका काय हाडनाका म्हणटात कित्याक त्यांचे श्राप आसा त्यांचे श्राप आसा तो तुमचेर पडटलो ते तुमचेर पडटलो श्राप वो श्राप तुम पे पड़ेगा वो मूर्ति पे वो सोना पे श्राप है वो तुम पे आएगा ह्या मूर्त्यांक विटोवन तुम्ही विकोत करून जाय कित्याक सर्वेस्परान त्याचेर श्राप घाला हा सर्वेस्परांनूय तेजे श्राप घाला विल रीड बुक ऑफ जोशुआ हे लोक they went in the battle in the book of Joshua 7:1 Joshua 7:1 these people went in the battle हे बॅटलाक गेला आणि कितें जालें एकल्यान बरें कितें दिसले सोना का कुछ अच्छा दिखा वो वार पे गया और एकला आदमी ने अच्छा कुछ दिखा दुश्मन का सोने का वो डाला जेब में और लेके आया भी देखते हैं क्या होता है 7:1 in the chapter 7 I just read But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. Okay, trespass is a sin. In the accursed thing, in the doomed, in the destruction thing, destructive thing. Accursed is destructive thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. एक आदमी वो शहर देश का सोना लिया दूसरे देश का वो दुश्मन का वो मारा गया उनका कुछ सोना पूरा देश against the anger of the Lord was kindled against the entire nation Israel. तो ये लोग क्या करते थे why they used to do this देव त्यांका कित्याक मारून उडयतालो हे कोण पातक केला ये लोग क्यों मारता था भगवान परमेश्वर पिता पुराने व्हाट इज कवर्नेंट हिंदी ओल्ड टेस्टमेंट पुराने इसमें क्यों बोलते थे परमेश्वर क्यों मारते थे उनको क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानते थे पागलपन करते थे नहीं वो और येशुआ नहीं था मीन देयर वाज नो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम देयर वाज नो सोल्यूशन आता तुका डायबिटीज काय कितें तुका कट जाला आणि ते सेप्टिक जाला ते कितें करतात दोतोर कितलो व्हडलो जावं ते कातोत तेले पांय कित्याक ते सेप्टिक नाल्यार वयर चडटले that septic will climb up and it will your entire body will get destructive so what the doctors do they cut it आणि काय उपाय ना tomorrow if there is a solution to that problem they will not cut your leg tomorrow medical science brings a solution to the problem they will not cut your leg now they have to cut your leg why because here they don't cut they'll have to cut here if not here your entire body will go so it is spreading so यहाँ solution नहीं थे ओल्ड टेस्टामेंट में येशुआ नहीं था पातक केला अख्खे एकल्यान पातक केला देशान अख्खे देश आता पातक देशाक लागला आता कितें करचें पडटा तेंका एका मारून उडयचें पडटा ते पातक बंद करपाक नाउ द कर्स श्राप हो रहा है इधर पूरा देश में एक आदमी के वजह से इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में कब अभी आप लोग मूर्ति करते थे ऐसा आई एम टॉकिंग टू कैथलिक्स पर्टिकुलर इफ यू आर लेट टू डू व्हाट यू आर डूइंग नाउ एंड बिलीव इन दिस गॉड you are finished. You would not be sitting here only. You would be finished by now. Only by the mercy and grace of His Son that He sent His Son upon the earth. Now this is the grace period. You have time to repent. Either you die before or if Yeshua comes in the second coming and you are still alive and not repented, you will bear judgment. Before that you have time to repent as long as you are alive. Now you see in the Old Testament, you see what happens. Here there is no savior. Yeshua is the savior. Yeshua is not in the sin. Yeshua नहीं था इधर. तो अभी पातो गेला एकला एक आदमी ने अभी समझ ये टाइम पे हम लोग था तो एक ही कोई भी एक आदमी मूर्ति का पूजा करते थे तो सबको ये लगता था वो पाप अभी कैसा निकलता था वो पाप उसको मार के उड़ाना है खत्म करने का This is just watch now this Joshua 7:1 7 and this now what is it the
I'll not take the names and all. One fellow trespassed in the accursed thing, and the anger of the Lord kindled against the children of Israel. Entire nation of Israel, 6 lakhs, that time we thought, no? 6 lakh people went out. सबको एक आदमी के वजह से इस सबको अभी क्या कर रहा है देखो. And Joshua sent men. अभी जोशुआ को पता नहीं, जोशुआ डजंट नो, ये जोशुआ को कुछ भी पता नहीं. अभी देख क्या होता है. Listen carefully. Joshua 7:2 says, and Joshua sent men from Jericho to Ai. Ai is a place which is beside Bethaven on the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go and view the country. And the men went up and viewed Ai. Now they are going to attack this nation Ai. So Joshua is sending spies into the land. Go and see, view this. Take a scenario report, bring a report. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go, but let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai, and make not all the people to labor thither. For they are but a few. अभी ये क्या बोल रहा है जोशुआ के spies आ रहे हैं. The spies are coming back. What report they are giving? Don't take all these people. Just take 2,000 to 3,000 people. Go. They are very few people. ये जोशुआ क्या करता है? यहाँ हम पढ़ेगा हिंदी में. वो क्या करता है? वो जाता है और लोगों को बोलता है वो गांव में जाके देख कितने लोग हैं, हम उनको आक्रमण करेगा. तो ये क्या बोलते हैं? जो स्पाई आता है वो बोलते हैं ये लोग थोड़े 2,000 3,000 लोग, बस उनको खत्म करते हैं. इजरायलियों ने प्रभु को अर्पित वस्तुओं के विषय में पाप किया. हाँ, पाप किया. युदावशी आकान ने, जिसके पुरके कर्मी जब्दी और जेरह थे, उन वस्तुओं में से अपने लिए कुछ ले लिया. इसलिए प्रभु कुछ ले लिया. अभी ये ले लिया. जोशुआ को किसको भी पता नहीं, वो चुपचाप लेके आया. इसलिए प्रभु ने क्रोधाग्नि इंसाए लियों के विरुद्ध भड़क उठी. योशुआ ने यरीको से कई पुरुषों के बेत आवेन के निकट आए, जो बेतेल के पूर्व में स्थित है. यह कहते हुए भेजा कि वहां जाकर उस प्रांत को भेद लो. तब उन पुरुषों ने जाकर आई का भेद लिया. योशुआ के पास लौटकर उन्होंने उससे कहा, वहां सारी सेना भेजने की जरूरत नहीं है. 2 या 3 हजार आदमी जाए और आई पर आक्रमण करें. उन लोगों की संख्या अधिक नहीं है, इसलिए वहां सब लोगों को जाने का कष्ट न दे. वयर वचात आणि देशाची पूर्ण इस्रायल व प्रजा सर्वेश्वरा भेटल्या वस्तूची विषयी अविश्वासी झाली. जुदाच्या कुळातल्या जेराच्या पुता जाबदीच्या नातवान आणि कामीच्या पुतान आकानान सरेसभरात भेटलेल्या वस्तूतले कितें तरी काढून दवरले. भेटलेल्या वस्तूतले कितें तरी काढून दवरले आणि सरेसभराचो पण आता हे जोशुआक आणि कोणाक खबर ना, हाडून लिपोवन हाडून दवरले ताणे. आणि सरेसभराचो राग इस्रायलाचेर चढलो. हुंय चढलो राग इस्रायलाच्या गावात. एकल्यान तूक एकल्यान केला, पूण आख्खे गांवाचेर आता हे श्राप येला. वयर वचात आणि देशाची सोदपूस करात असे म्हटले. म्हणून जोशुआन जेरिको थांब बेथलेम उदेंतेक आणि बेथलान लागसर आशिल्ल्या आय शहरात मनशां धाडले. ते गेले आणि आयची सोदपूस केली. जोशुआशी परतून येऊन ताणे म्हटले,
सगळे परप्रेझेंट वयर वेची गरज ना 2 व 3 हजारा वचून दी आणि आयचेर आक्रमण करून दी सगळ्या लोकांक त्रास दिवचे न्हय कित्याक सगळ्याक त्रास दिवचे न्हय पूण आता तांकां खबर ना ते सद्दां जिखताले कित्याक देवाक लागून आता श्राप पडला तांकां खबर ना देव ना कित्याक ते थोडेच आसा ते थोडेच आहा म्हणटा इतले गरज ना ते थोडे जाण न्हू हे 2000 3000 पुरो अटॅक करया तांकां सो सो एक सांग म्हाका हे डेजर्ट 40 years 40 साल ये लोग डेजर्ट पे गया 40 साल 40 years बहुत जाण प्रॉमिस लँडान पावले हाउ मेनी ऑफ देम रीच फॉर आफ्टर 40 years इन द प्रॉमिस लँड हाउ मेनी ऑफ देम एनीबडी नोज द नेक्स्ट जनरेशन only 2 people managed to God only allowed 2 people to enter not even Moses उय तेका मेळोंक ना चान्स he disobeyed God in one place only 2 people Joshua and Caleb only 2 people entered the promised land of the old generation all entire new old generation died in the desert किसको भी नहीं लेके गया वो पूरा क्या बोलता है वो generation the full generation पीढ़ी हाँ पूरा पीढ़ी वो जो पुराना पीढ़ी था वो सब मरे सिर्फ जोशुआ और कलेब वो बुढ़े लोग थे बाकी का उनका बेटे गए वो नहीं गए क्यों they were murmuring and grumbling what is murmuring grumbling it is not here only Joshua and Caleb entered the promised land हे पातोक हे सगळे बडबडटाले मरे इन द डेजर्ट तांकां कोणाक व्हरोंक ना सगळे मेले 40 years तिंगाच तांकां सोडून तांकां तिंगा गुणोवन येलो देवान आनी ते तिंगाच मेले तेंचे कोण भुरगे आहा ते पावले प्रॉमिस लँडान आनी फकत जोशुआ आनी कालेब म्हणून दोग जाण तेच गेले प्रॉमिस लँडान मोजीसूय पावूंक ना मोजीसानूय काबार केलो तिंगा देवान ते म्हणल्यार यू विल डाय हियर यू कॅन सी द प्रॉमिस लँड तो दोंगरार येला आनी ताका सांगला आय शोड यू द प्रॉमिस लँड बट ही सेड यू विल नॉट एंटर द प्रॉमिस लँड सी So there went up thither of the people 3,000 men and fled before the men of Ai. ये लोग गया उधर 3,000 लोग और भागा वो आय के सामने नहीं हुआ उनके पास झगड़ने के लिए वो भाग के आया and the men of Ai smote of them 36 men and they chased them from before the gate even to Sherbarim and smote them in the going down whereof the hearts of the people melted and became like water हे जन 3,000 गेले व्हडले मारपाक तांकां ते उदक कशें तेंचे काडीत उदक कशें येले धांवन 36 लोगांक मारले तेमी इसलिए वहाँ सब लोगों को जाने का कष्ट न दे अतः लोगों में लगभग 3,000 पुरुष वहाँ गए परंतु ऐ के लोगों के सामने उन्होंने पीठ दिखानी पड़ी हाँ क्या दिखानी पड़ी पीठ दिखानी पड़ी and 5 ऐ के लोगों ने उनमें लगभग 36 को मार डाला और नगर के फाटक के सामने से शबारिम तक उनका पीछा किया और ढलान पर उन्हें मार डाला लोगों का हृदय दहल उठा और उनका साहस टूट गया सो ते कितें ते 3,000 गेले आनी पोते धांवन येले थिंगासून 36 लोकांक मारून उडयले आनी कितें नाव दे हार्ट्स वर मेल्टेड और उनका साहस टूट गया हाँ साहस टूट गया उनका साहस टूट गया श्राप है अभी परमेश्वर नहीं है उनके साथ ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं जोशुआ को 3,000 बस ये सबको क्यों ले रहे हैं खाली बेकार जाएगा वो लोग और आएगा 3,000 लोग को लेके गया वापस आया वो भाग के उसमें से 36 लोग को मारा वरचे मधले सुमार 3,000 वयर गेले पूण आयच्या लोकां मुखार पळून गेले हाँ पळून गेले आयच्या मनशांनी त्याच्या मधल्या 36 जाणांक मारून शहराच्या दरवाट्या हांव शेबारीम पर्यंत वेले आणि थंयसरले देवतेर तांचे कुडके केले
प्रजेची काळजा विरून गेली आणि उदका भाषेन झाली. हा उदका भाषेन झालंय. कितले ब्रदर 30. Okay. Now in 7, Joshua 7, 6, 7 says, and say, Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord. Now this ark of the Lord, no, is the throne there. Hindi, what it say? And Joshua fell dead. प्रभु की मंजूषा के सामने हाँ मुंह मंजूषा के सामने. Nobody knows ये क्या है, ये मंजूषा क्या है. तू किधर है म्हणता कोंकणी? आग पेटी मुखार आर्क तो. पेटी, आर्क ऑफ द लॉर्ड. कोणा खबर है? पूजाची पेट आग पेटी. किधर म्हणता ते का? एक किसको कितने लोग को पता है? आर्क ऑफ द कवर्नेंट. व्हाट इज दिस आर्क? एवरीबॉडी नोज. आर्क इज दैट, सी, टेम. हा पळय आणि मध्ये ते मसी सीट विथ 2 cherubims. एक बॉक्स कशें आहले आणि तिका एक सीट आहले देवाचे आणि 2 आंज आणि तितून इट वॉज केप्ट इन द होली ऑफ होलीज when they had the temple, when they had the tent. Ark is like an altar. It is like an altar where the sprinkling of blood, very powerful. Where the ark is, there the power was. The ark. Here what is saying? Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until eventide, means evening. He and the elders of Israel, and put dust upon their heads. And Joshua said, Alas, alas is oh. O Lord God, whereof hast thou at all brought these people over Jordan to deliver us in the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God is would that God we had been content, we had been pleased. And dwelt on the other side of Jordan. Huh? O Lord, what will I say when Israel turneth their backs before their enemies? Means what happened? Israel turned their backs. ते इल्ले ओडले हे हिरो काय 3000 धांवचे पडले, turning their backs there to run. Now what he will say is saying, what shall I say when Israel turneth their backs before their enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round. Environ us round means surround us. Now आम्ही मध्ये सगळे दुश्मन राउंड अबाउट. ना व्हाट वी डिड, ये लोग सुना तो ऐसा हो गया, 3000 लोग भाग के गया. ये लोग दुश्मन क्या करेगा? खत्म करेगा हमको. ये म्हणलं what shall they envire us round and cut off our name from the earth, and what will thou do unto thy great name? योशुआ ने अपने वस्त्र फाड़े और वह तथा इजराइल के नेता शाम तक प्रभु की मंजूषा के सामने मुंह के बल पड़े रहे. उन्होंने अपने अपने सिर पर राख डाली. यीशुआ से प्रार्थना की, हाय प्रभु मेरे स्वामी, तुम्हें क्यों इस प्रजा का यर्दन पार करने दिया? ये अभी प्रभु को पूछ रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं यहाँ किसने मूर्ति चुराया और लेके आया. इनको पता नहीं. अभी प्रभु को बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्या तू हमें अमोरियों के हवाले कर हमारा सर्वनाश करना चाहता है? इससे तो यही अच्छा होता कि हम यर्दन के उस पार ही रह गए होते. स्वामी, मैं अब क्या कहूँ?
इज़राइल ने अपने शत्रुओं की पीठ दिखाई। हाँ वो भागा ना पीठ दिखा के। कनानी और इस देश के सब निवासी यह सुनकर हम टूट पड़ेंगे और पृथ्वी पर से हमारा नाम मिटा देंगे। तब तू अपने महान नाम के लिए क्या करेगा? यशवान आपली अंगावली पिकली आणि आज नायसर सरसब्राचे आरपेट पेटी मुखार तो सरपट पडलो. इस्रायलाच्या जाणट्यांनी तसे केले आणि सगळ्यांनी आपले तकले धूळ घाली आणि जोशुआन म्हटले, हा सरसबरा देवा आमका अमिरीच्या ताब्यात करून मारून उडवचे असले जाल्यार तुवें ह्या राष्ट्रांक जॉर्दना पलतडी करून कित्याक तकस घेतले? आमकां तुवें जॉर्दनाचे दुसरे वाटेन दवरली बी जाल्यार अदीक बरें जातलें आसलें. म्हाका बोगस धनिया, पूण आतां इस्रायलान दुश्मनान फाट वळली तेन्ना हांव कितें म्हणू? कारा आनी देशांत रावपी सगळी ही खबर आयकताली. आमचे आड झुजून ती आमचे नांव पृथ्वी वेले पुसून उडयताली. उपरांत तूं तुज्या वर्त्यान नांवाचें कितें करतलें?